अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हाल अहवाल सां गॾु मां आहियां जो मेज़बान अशफाक मंगी। नाज़रीन, ताज़ो एक्सपो सेंटर कराची में रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से एक तकरीब मुनक़िद कई वई, जैमें मुख़्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर के अलावा शागिर्दनि भी शिरकत कई और मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जा स्टॉल पिणु लगाया विया। अचो तो ॾिसूं था इन हवाले से ये रिपोर्ट पंहिंजे प्रोग्राम हाल अहवाल में। मां इहो चवंदुसि त हिन क़िस्म जा प्रोग्राम जेके आहिनि से थियणु खपनि ऐं जीअं असांखे अॻु में ॿुधायो वियो आहे हीउ जेको प्रोग्राम थियो आहे इन में प्लेटफॉर्म मुहैया कयो वियो आहे सभिनी यूनिवर्सिटीज़ खे, सिंध जे सभिनी इदारनि खे, त उनखे इंडस्ट्री सां कीअं लिंकेज में आणिजे, जेको तमामु ज़रूरी हुयो। जेकॾहिं मां चवां त मां शाह लतीफ़ यूनिवर्सिटी जो वाइस चांसलर आहियां ऐं मुंहिंजे यूनिवर्सिटी में अहिड़ा टैलेंटेड ॿार वेठा हुआ जिन लास्ट टाइम असां उते हिकिड़ो एक्सपो कयो। उन में ॿारनि जेके गैजेट्स ठाहियूं, जेके नंढियूं नंढियूं शयूं ठाहियूं, एॾी उन में तख़लीक़ मूंखे नज़र आई त मां सोचां पियो त वाक़ई उहो जेको गानो सिंगार कबो आहे कंहिंखे ॾेखारण जे लाइ, त हीअ ॿारनि जेको हेतिरो कमु कयो आहे, जेको साइंस टेक्नोलॉजी जे हवाले सां उन में नंढियूं नंढियूं अहिड़ियूं हुननि शयूं ठाहियूं जेके वॾे पैमाने ते जेकॾहिं इंडस्ट्री में वञनि त उहे मल्टीप्लाई थी सघनि थियूं। छाकाणि त जेका पहिरीं रिसर्च हूंदी आहे, लैब रिसर्च हूंदी आहे, उनखां पोइ पायलट रिसर्च थींदी आहे, उनखां पोइ वञी असां इंडस्ट्रियल लेवल ते पहुचंदा आहियूं। त इहो सॼो टैलेंट मूं ॾिठो त असांजे उत्तर जे ॿार में आहे। बज़ाहिर हू केॾो बि सादो हुजे पर उनजो ज़हन मूं ॾाढो रिच ॾिठो आहे। तंहिंजे करे अहिड़नि ॿारनि खे जेको मौक़ो फ़राहम कयो आहे सिंध HEC, तमामु वॾो मौक़ो आहे। ऐं असां इन में जेको आहे सो सिंध HEC जे इंतिज़ामिया जा थोराइता आहियूं, जन सिंध जे सभिनी यूनिवर्सिटियुनि खे, शहरी, बहिराड़ी
ऐं सरकारी गैर सरकारी सभिनी यूनिवर्सिटियुनि खे गॾियो आहे, जंहिंमें असांजे ॿारनि खे मूं ॾिठो त हिकिड़ा सादा ॿार हुआ ऐं जॾहिं हितां लास्ट टाइम बि आया त मोटी आया त एॾा तेज़ थी विया, छाकाणि त उन्हनि मुख़्तलिफ़ ॿारनि सां इंटरेक्शन कयो, उतां कुझु शयूं सिखियूं, कुझु सेखारियूं ऐं इन शइ जी ख़ासि तौर ते असांजे हिन ख़िते खे ज़रूरत आहे। ऐं ख़ासि तौर ते मां पंहिंजे इलाइक़े जी ॻाल्हि कंदुसि, उत्तर सिंध जा जेके 8 इलाइक़ा आहिनि, मुंहिंजी यूनिवर्सिटी सिंपली मां ईअं खणी चवां त उहा इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटी आहे जेका 3 सूबनि खे कैटर थी करे, जंहिंमें लोअर बलूचिस्तान थो अची वञे, अपर सिंध थी अची वञे ऐं लोअर पंजाब थो अची वञे। इन हवाले सां उनजी अहमियत तमामु घणी आहे ऐं उन में जेको टैलेंट आहे उनखे असांखे कैटर करणु खपे ऐं उन कैटर करण जो जेको मौक़ो असांखे हिन सिंध HEC ॾिनो आहे सो तमामु आला आहे। ऐं इन क़िस्म जूं जेके असां नुमाइशूं थींदियूं रहंदियूं त ख़ासि तौर ते असांजे ॿाहिराड़ीअ जा जेके ज़हन आहिनि, जिन वटि तमामु घणो रिच माइंड आहे, उहे साम्हूं अची वेंदा ऐं उहे दुनिया जे साम्हूं पंहिंजो टैलेंट पेश करे सघंदा। ऐं सम्झां थो त अॼु जेका सिंध सेकेंड सिंध हायर एजुकेशन सिंध जे तरफ़ां रिसर्च ऐं टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट जो जेको शौक़ास 2023 कयो वियो आहे, अने अॻे साल बि कयो 2022 मई में, हिन साल बि कयो वियो आहे, त हिन में जेको तक़रीबन 37 खां मथे पब्लिक ऐं प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी हिसो वरितो आहे ऐं अहिड़े नमूने 200 खां मथे प्रोडक्ट डेवलपमेंट करे आया आहिनि स्टूडेंट्स। हाणे एक्चुअल अहिड़ा प्रोग्राम जेकॾहिं थींदा त आउं सम्झां थो हायर एजुकेशन सिंध जी बहितर थींदी। हिकिड़ो न सिर्फ़ु हायर एजुकेशन बहितर, हिकिड़ो त क्वालिटी एजुकेशन ऐं क्वालिटी रिसर्च ते फोकस कयो वेंदो। हाणे क्वालिटी रिसर्च जे हवाले सां हे जेके बि सिंध जूं जेके यूनिवर्सिटियूं पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटियूं आहिनि, प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटियूं आहिनि, असांजे सिंध जे नौजवान जेको आहे उनजो सिंध जी ज़मीन ऐं जेको उन नौजवान जो जेको ज़हन आहे उहो ज़रख़ेज़ आहे ऐं उन ज़रख़ेज़ जे उन हिकिड़ो त उन्हनि जे टैलेंट खे एक्सप्लोर करे हिते आंदो पियो वञे, छो जो हुननि पंहिंजी रिसर्च जे ज़रिए उतां जेके शयूं इनोवेशन ऐं जेके आइडियाज़ खणी आया आहिनि उहो अॼु हिते डिस्प्ले कया आहिनि। ऐं सम्झां थो त इहो उन्हनि खे अपॉर्चुनिटी ॾियणु खपनि ऐं हीअ हर साल न पर हर 6 महीननि ते हीअ इवेंट थियणु खपे त जीअं सिंध जो जेको टैलेंट आहे उनखे एक्सप्लोर करे सघिजे। ऐं कराची में जेको एक्सपो सेंटर में प्रोग्राम थी रहियो आहे, ऐं सम्झां थो त हिन में जेके ॿाहिरि मुल्कनि जा सफ़ीर आया आहिनि उन्हनि खे ख़बर पए त सिंध जे जेको सो ॿाहिराड़ी में छा पियो थिए, सिंध जे अर्बन इलाइक़नि में छा पियो थिए ऐं हूअं ई सॼी सिंध जो जेको दारोमदार आहे उहो फूड सिक्योरिटी ते आहे। ऐं सम्झां थो त अहिड़ा प्रोडक्शन फूड सिक्योरिटी जा इशूज़ आहिनि, क्लाइमेट चेंज जा इशूज़ आहिनि, त उन्हनि खे हल करण जे लाइ अहिड़ा इवेंट थियणु खपनि जीअं नौजवान पंहिंजा नवां आइडिया खणी अचनि त जीअं उन आइडियनि जी तलाश में जेको मसइलनि जो हल कढी सघिजे। एग्ज़िबिशन तमामु इहो सुठो क़दम आहे ऐं हिन एग्ज़िबिशन करण सां जेके बि हिते यूनिवर्सिटियूं या ॿिया हिते अचनि था उन्हनि खे नॉलेज मिलंदी, टेक्नोलॉजी जे बारे में नॉलेज मिलंदी ऐं हीअ टेक्नोलॉजी जेको जेके हिते जेका बि टेक्नोलॉजी शो कई वई आहे उहा सिर्फ़ु इंटरनेट तां उन तां जेको ॾिसी करे ऐं उनजी कॉपी करे उहा कई वञे थी, पर एक्चुअली अॼुकल्ह जो जेको टेक्नोलॉजी आहे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आहे, रोबोटिक आहे या 3D में जेके हलनि पियूं, अहिड़ी इहे टेक्नोलॉजियूं जेके आहिनि उहे हींअर आहिनि जेके हिते असां वटि न कराई वञनि थियूं। हींअर यूनिवर्सिटियुनि में क्लासिस शुरू थिया आहिनि रोबोटिक जा, पर रोबोटिक जा एक्सपीरियंस जेको एक्सपेरिमेंट को बि कोन्हे, उहे एक्सपेरिमेंट उन्हनि जो इंस्ट्रूमेंट ई कोन आहिनि, उन्हनि त उन हिसाब सां कराइनि, सिर्फ़ु थियोरिटिकली पढ़ायो वञे थो हिते। ऐं बाक़ी टेक्नोलॉजी जो जेका बि हिते आहे असां वटि का बि इन्वेंशन कान्हे, असां कयूं त था कॉपी करे उहा शइ करे थो, पर अॼु ताईं असां एतिरियूं रिसर्चूं करियूं था पर उहा रिसर्च उहा ओल्ड टेक्नोलॉजी खे करे उन ते रिसर्च कयूं पिया, पर पंहिंजी टेक्नोलॉजी पंहिंजी रिसर्च जेका आहे अॼु ताईं असां न कई आहे। सो आई थिंक दैट इन फ्यूचर असां जेको सो वधीक रिसर्च करे ऐं पंहिंजी इन्वेंशन कंदासीं ऐं असीं बि पंहिंजी जेको सो इन्वेंशन करे दुनिया खे ॾेखारींदासीं त असीं पाकिस्तान जा होनहार शागिर्द आहियूं, होनहार टेक्निकल आहियूं ऐं जेके स्किल पर्सन्स आहियूं ऐं असीं पंहिंजी जेको आहे महारत सां इंशा अल्लाह ताला असीं बि कुझु ठाहे ऐं महिनत करे ॾेखारींदासीं। असां लाइट वेट ब्लॉक ऐं लाइट वेट एग्रीगेट ऐं लाइट वेट सरियो ठाहींदा आहियूं, जंहिंसां असां सस्ता ऐं फ्लड जे लाइ ॾाढा मुयसरु घर ठाहियूं था, जेके सेमी एम्फीबियन आहिनि, जेकी पाणीअ जे मथां तैरे सघनि था ऐं उहे अहिड़े क़िस्म जा घर आहिनि जेके असां मुंहिंजे दड़े में 5000 साल पहिरां बि ॾिठा आहिनि। इन ते असांजो जेको वर्दी ऑनरेबल वाइस चांसलर साहिबु आहे ज़ाहिद हुसैन खंड साहिबु, हुननि जी हिकिड़ी ख़ासि इंटेलिजेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जी तरफ़ ओरिएंटेशन आहे ऐं उहो चाहींदा आहिनि त असां जदीद में जदीद टेक्नोलॉजी ऐं जदीद में जदीद जेकी बि साइंस में अॼुकल्ह हले थो दौर, उन खां बि अॻिते हिकिड़ो क़दम अचूं ऐं हिकिड़े ख़ासि तरह सां अॻिते वधूं ऐं
पंहिंजी रिसर्च खे अॻिते वधायूं ऐं ख़ासि तरह जा घर लाइ ऐं लोकल जेकी माण्हू आहिनि उन लाइ बहितर खां बहितर सहूलियात पैदा करे सघूं। इहो ई असांजे मोटो आहे, विजन आहे ऐं असांजे वाइस चांसलर साहिबु असांखे ईअं ई सेखारियो आहे त असां अॻिते वधूं ऐं यूनिवर्सिटी खे ऐं इलाइक़े खे ऐं मुल्क ऐं क़ौम खे ऐं पूरी ग्लोबल कंट्री खे पाण सां गॾु ग्रीन सिचुएशन सां गॾु UN सां गॾु पंहिंजो हिकिड़ो राब्तो रखूं। इधर आया बहुत इंटरेस्टिंग ये एक्सपोर्ट टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च, इसलिए मेरा प्रीवियस काम टेलीकॉम इंजीनियर में था, अभी हम कौशल इंजीनियर बन गया। देखो हम वेरी सरप्राइज जब तक क्या देखा इधर माशाल्लाह, हम सोचा नहीं, हम सोचा बस इधर थोड़ा नॉर्मल चीज़ देखेगा, लेकिन इधर माशाल्लाह कौन सा प्रोजेक्ट देगा, कम से कम बोलते हैं 400 प्रोजेक्ट, लेकिन कौन सा प्रोजेक्ट अगर ये यूथ को हाथ पकड़ने का, इसको बड़ा इंडस्ट्री का साथ काम देने का, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होएगा। ये माशाल्लाह हम क्या देगा आज, फर्नीचर का प्रोग्राम देगा, आदमी का ह्यूमिडिटी देगा, खाना का भी बिस्किट देगा, रिसाइकलिंग प्लास्टिक देगा, मैनी थिंग आप देखा इधर। बहुत इम्प्रेस्ड आज, उन लोग का बहुत सपोर्ट चाहिए, आइदर फ्रॉम इंडस्ट्रीज, फ्रॉम गवर्नमेंट, फ्रॉम ऑल दिस। इवन हम सुना ये हिज एक्सेलेंसी द जनरल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, he said that we have take, हम लोग लाजम ख्याल करेगा अपना छोटा बच्चा का जो स्कूल में, वो लाजम इसको अच्छा प्रोग्राम देने का, अगर उसको अच्छा प्रोग्राम देने का फ्यूचर में यूनिवर्सिटी में ये ऑलरेडी हैव देयर ओन प्रोजेक्ट्स, दे एवरी सारा लोग दे हैव ओन प्रोजेक्ट्स, दे विल बिकम वेरी स्मार्ट एंड दे आर स्मार्ट, रियली दे आर स्मार्ट, बट नीड गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री टू टेक हैंड ऑफ देम। मां हिन ते ॻाल्हाइणु चाहींदसि त ही सिंध हायर एजुकेशन कमीशन जो इलाही सुठो माना अंदाज़ आहे त हू मुख़्तलिफ़ शयुनि में इलाही यूनिवर्सिटियुनि खे इम्प्रूव करे रहिया आहिनि, जंहिंमें ही नुमाइश जेको हिननि जी ॿी लॻी आहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी ते, ही असांजी न्यू जनरेशन खे हिकिड़ा नवां आइडियाज़ ॾींदी। ऐं ॿियो असां टीचर ऐं एडमिनिस्ट्रेशन जे लाइ बि हिकिड़ो चैलेंजिंग मक़ाम आहे त असांखे हाणे कन्वेंशनल स्टाइल वारी एजुकेशन खे छॾे स्किल ओरिएंटेड एजुकेशन ॾांहुं वञिणो आहे, छो त अगरि असां ईअं नथा करियूं त पोइ असां तरक़ी बि नथा करे सघूं। त इन जे लाइ मां इलाही एप्रिशिएट कंदसि सिंध हायर एजुकेशन कमीशन खे त हू तमामु घणो सपोर्ट करे रहिया आहिनि असांखे हिन क़िस्म जी शयुनि जे लाइ, लेबॉर्ट्रीज़ जे लाइ, हिन क़िस्म जी एक्टिविटीज़ जे लाइ। अॼु हिते अची ॾाढी ख़ुशी थी आहे, न्यू जनरेशन खे मूं ॾाढो एक्टिव ॾिठो आहे। मुंहिंजी पंहिंजी यूनिवर्सिटी जा ॿार जेको कॾहिं तसवुर बि न पिया करे सघिया त इन क़िस्म जी जॻहियुनि ते वेंदा ऐं पंहिंजा प्रोडक्ट या पंहिंजी शयूं डिस्प्ले कंदा, उन्हनि जो कमु ॾिसण खां पोइ मूंखे इन लिहाज़ खां उमेद पई वधे त यकीनन असांजी सिंध जेको हूंदी हायर एजुकेशन में हिकिड़ो मिसाली सूबो चवराईंदी। सिंध HEC प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कई आहे, इन में असां सॼी सिंध जी यूनिवर्सिटियूं खे घुरायूं आहिनि ऐं मोर देन 400 स्टॉल अरेंज कया आहिनि। इन में असांजो मक़सदु इहो आहे जो रोल असां प्ले कयूं था एज अ ब्रिज बिटवीन दी यूनिवर्सिटीज़ एंड दी रिसर्चर्स एकेडमिया। सो मुंहिंजी नेक तमन्नाऊं आहियूं ऐं सभिनी जे लाइ जेका इन में हिसो वरितो आहे। तमामु सुठे अंदाज़ में ही एक्सपो सेंटर में हिन वक़्तु रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी जी जेको ही कॉन्फ्रेंस रखी वई रिसर्च जे हवाले सां 2023 में, ऐं ही जेके हिन में तमामु यूनिवर्सिटियूं सिंध जूं हिन में मौजूदु आहिनि, स्टॉल हिननि जा मौजूदु आहिनि, ऐं गॾो गॾु रिसर्च जे हवाले सां जेतिरो बि कमु थी रहियो आहे साइंस ऐं टेक्नोलॉजी खे जो उहो हिन वक़्तु हिते मौजूदु आहे, ॾेखारियो पियो वञे एक्सपो जे ज़रिए। ऐं हिन वक़्तु जेके असां जी जॻह ते बीठा आहियूं हुन में अवां ॾिसो था खोड़ सारा माण्हू नज़र अचनि पिया जेके हिन इंटरनेशनली जेके रिसर्च करे रहिया आहिनि यूनिवर्सिटियुनि जे हवाले सां, ऐं जेको हींअर कमु थी रहियो उन ते बि। ऐं गॾो गॾु अव्हांखे इहो बि ॿुधाईंदा हलूं त हिन वक़्तु पाकिस्तान में रिसर्च जो कमु तमामु उनजो ईअं चइजे मान मथां आहे, बल्कि टॉप ते आहे। ऐं ॿाहिरि मुल्कनि खां ख़ासि तौर इंटरनेशनल जेके यूनिवर्सिटियूं आहिनि उहे पाकिस्तान में अचनि पियूं, ऐं रिसर्च कोऑर्डिनेशन थी रहियो आहे, कोलेब्रेशन्स थी रहियो आहे, ऐं फैकल्टी टू फैकल्टी जी रिसर्च आहे उहा वधी रही आहे। त हिन वक़्तु ख़ासि तौर कराची में जेको हिन वक़्तु एक्सपो में रिसर्च जेको आहे उनजी जेकी एक्सपो लॻाई वई आहे तमामु बहितर ऐं सुठे तरीक़े सां मौजूदु आहे। ख़ासि कर NID जेके असांजी यूनिवर्सिटी आहे उहा बि हिन में शामिल आहे। इस दफ़ा सिंध HEC एक्सपो में हमारे 58 प्रोजेक्ट्स जो हैं एक्सेप्टेड हुए हैं और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे बायोकेमिस्ट्री, कंप्यूटर्स, बायोटेक्नोलॉजी, इसके अलावा हमारे पास फूड साइंस है
اور ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں جنہوں نے اس میں پارٹیسپیشن کی ہے. اس دفعہ سندھ HSC ایکسپو جو ہے وہ بہت زیادہ بگ پلیٹ فارم میں جو ہے آرگنائز ہوا ہے. ہمارے جو ہال 6 میں اسٹالز لگے ہیں، اس دفعہ 4 لگے ہیں جو کہ کافی بڑے ہیں، اور ہم نے اس کو کافی اچھا جو ہے وہ پروموٹ کیا ہے. بہت زیادہ جو ہے سندھ HSC کام کر رہی ہے انڈسٹری کولیبریشن میں اور اکیڈمیا کے لیے. تو ایسے ایونٹس ہوتے رہنے چاہیے تاکہ ہمارا جو اکیڈمیا اور انڈسٹری کا گیپ ہے وہ فل ہو جائے. سیکنڈ ریسرچ ٹیکنالوجی پروگرام ہے. اس میں بیسیکلی جو یونیورسٹیز ہیں پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر کی، ان کو ہم نے موقع دیا کہ ان کے بچوں کے جو پروجیکٹس ہیں جو وہ بناتے ہیں ان پروجیکٹس کو وہ شوکیس کریں ہمارے پاس. اور ہم نے انڈسٹری کو انوائٹ کیا کہ انڈسٹری کے لوگ آئیں، ان پروجیکٹس کو دیکھیں. ان پروجیکٹس میں کوئی ایسا پروجیکٹ ہے جو کہ انڈسٹری کے لیے کسی فائدے کا ہے تو وہ ان کے ساتھ مل کر کام کر سکتے ہیں. یہ ہم بیسیکلی HEC سندھ جو ہے ایک برج کے طور پر کام کرنا چاہتی ہے اکیڈیمیا اور انڈسٹری کے درمیان. ساری دنیا میں ریسرچ ہمیشہ یونیورسٹیز میں ہوتی ہے اور اس کو پھر آگے مارکیٹنگ کرنا، کمرشلائز کرنے کا کام جو ہے وہ انڈسٹری کا ہے. آپ کہیں بھی چلے جائیں، ابھی کووڈ کے زمانے میں جیسے ویکسین نکلی تو آکسفورڈ یونیورسٹی نے بنائی اور پھر بعد میں اس کو وہ کیا گیا، مارکیٹ کیا گیا. اسی طریقے سے پاکستان میں ریسرچ کلچر ہے ہی نہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے یونیورسٹیوں میں ریسرچ کا بچوں میں جو ہے رجحان پیدا ہو، بچوں میں شوق پیدا ہو. آج ہمارے جو پروجیکٹ ہم نے کیے 400 سے زیادہ پروجیکٹ ہیں، 38 یونیورسٹیز نے حصہ لیا ہے اور ہمیں یقین ہے کہ ان میں سے کچھ نہ کچھ پروجیکٹ جو ہیں ہمارے انڈسٹری کے لوگوں کو اپنے لیے فائدے کے نظر آئیں گے اور کوئی یونیورسٹی اور انڈسٹری کے درمیان کوئی MOU وغیرہ سائن ہوگا. اس طرح کی نمائش ایگزیبیشن کی بہت سخت ضرورت تھی ان حالات میں، اور HEC سندھ نے جو تمام لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں مگر جو اس وقت چیئرمین آئے ہیں اور ان کی جو ٹیم انہوں نے اپنے ساتھ چنی ہے، انہوں نے کمال کر دیا ہے کہ وہ اس طرح کی ایگزیبیشن جس کی ملک کو اس وقت ضرورت ہے اور رہے گی، انہوں نے بھرپور حصے میں بھرپور طریقے سے یہ ارینجمنٹ کیا ہے اور تمام پبلک اینڈ پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی کو انہوں نے اکٹھا کر کے کمال کر دیا. اور وہ بچے جنہیں ایکسپوجر کی ضرورت ہے وہ آ کر یہاں ایکسپوجر لے رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. یہ ان کی ایک کامیابی ہے HEC سندھ کے چیئرمین کی. اور میری گزارش ہوگی کہ HEC سندھ اس طرح کے ایگزیبیشنز کرتی رہے، اور میری یہ بھی گزارش ہوگی کہ وہ اس طرح سے انڈونیشیا، ترکی، پاکستان سے باہر جائیں اور وہاں پر بھی یہ نمائش کریں. This event is very useful for both student and industry to possible cooperation, especially in industry. They may find something new and ideas, and I saw also some innovative product from the university. They need collaboration from industry, and I would like to also share this idea also apply to Indonesia, and we are glad that we have collaboration with some university in Sindh province, and which they also collaborate with Indonesia both in the technology also in IT. साईं ही तमामु इम्पोर्टेंट शइ आहे. जॾहिं असां एकेडमिया ऐं पंहिंजो इंडस्ट्री जी लिंक जी ॻाल्हि था कयूं त एकेडमिया ऐं इंडस्ट्री में हिकिड़ो वॾो गैप आहे. उहो गैप ही फिल करण जी कोशिशि कंदो शोकेस. हिन शोकेस जो मक़सदु इहो आहे त जेके बि स्टूडेंट जेके प्रोजेक्ट ठाहिनि था, छो असां पंहिंजे डोमेन में था रहूं, इंडस्ट्री वारा पंहिंजे डोमेन में था रहनि. असां प्रोजेक्ट ठाहियूं था, उहो प्रोजेक्ट जो कहिड़ो कमु आहे, किथे यूज़ थींदा, या कहिड़ा क़िस्म जा प्रोजेक्ट एकेडमिया खे ठाहिणु घुरिजनि. ही उहो प्लेटफॉर्म आहे जंहिंमें ॿई ॼणा मिली करे इहो फ़ैसिलो थींदो त कुझु प्रोजेक्ट जेका ऑलरेडी ठहियल आहिनि उन्हनि खे थोरो रिफाइन करे कमर्शलाइज़ेशन की तरफ़ खणी वञिणो पवंदो, ऐं कुझु प्रोजेक्ट असांखे हितां मिली सघनि था त तव्हां हिन आइडियाज़ ते कमु कयो. त हीउ तमामु हिकिड़ो सुठो इवेंट आहे जेको सेकेंड टाइम सिंध HEC कयो आहे. मां एप्रिशिएट थो कयां सिंध HEC खे त अहिड़ा मौक़ा ॾियनि. जी नाज़रीन, एक्सपो सेंटर कराची में रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से ये तकरीब ॾिठी. यकीनन अव्हांखे पसंदि आई हूंदी. इन सां गॾु पंहिंजे मेज़बान अशफाक मंगी खे ॾींदा इजाज़त. अल्लाह निगहबान.